Assalamu alaikum, dear friend. I am Sakib Wasi, your maths teacher. My YouTube channel name is Math Sarkar. Okay, dear friends, we have to discuss about a topic is trigonometric ratios. What is the trigonometric ratios? We have discussed about these trigonometric ratios in our O level syllabus. Okay, dear friends, this is our opposite, and in triangle this is our hypotenuse and this is highlighted is our adjacent. So we have to memorize the formula about so so is s mean s we have a sine theta equal to o mean our opposite, and h mean our hypotenuse. Similarly, cos theta, a means our adjacent, h means our hypotenuse. Similarly, we have a tan theta because tau represent t means tan theta. Here o mean opposite and a mean adjacent. We got these three formulas. Similarly, we have to discuss about the very important role here, a table about. I have to zoom it. Okay, dear friends, this is our first quadrant, this will be our second quadrant, this will be our third quadrant, and this will be our fourth quadrant. Okay, dear friend, after discussing about these quadrant system, we have to know in first quadrant all values positive, all trigonometric ratios is positive, which means sine theta, cos theta, everyone is positive. In second quadrant is s positive, mean only sine positive. In third quadrant, T positive means only tan positive. In fourth quadrant, we have to C positive mean only cos values positive. Other values are will be negative. After this one, we have to discuss about the complementary angles to memorize the complementary angles formulas. Okay, we have a formula is regarding about the sine alpha, and sine alpha plus beta equal to sine alpha cos beta plus cos alpha and sine beta. Remember that if we change the sign here, if we write it sine alpha minus beta, here the answer will be sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta. Similarly, we have a cos alpha plus beta equal to cos alpha cos beta minus sine alpha sine beta. If we change the sign here, here we change the sign here negative, so here will be also negative. Okay, now we have a next, we will start from the question. The question is sine 90 minus theta, what's the answer? Okay, this formula, this is also a formula to find the questions, so to find the answers about the regarding questions. Okay, um, sine 90 minus theta, it will be, if we write it here, alpha is 90 and beta is theta. Here first angle is over alpha, second angle is over beta. Okay, now here look this one, sine alpha, what is the alpha? Alpha is 90 degree. Okay, now cos beta means theta, so there is negative. I told you about this is negative, so it will be also negative. First formula here is minus cos 90 degree and sine theta. Okay, dear friends, sine 90 it is 0, so if this is 0, so cos is also will be 0. Next one is minus cos 90 is minus 1, and cos theta it will be plus cos theta. Okay, dear friend, we got the answer. So sine 90 minus theta, the answer will be we have to write it cos theta. You can memorize this formula in our different questions. Okay, this is okay. Now moving forward, this one cos 90 minus theta. Here I just zoom it. So we got sine theta. You can also show that by using previous formulas. Similarly, third one is we have tan 90 minus theta, which is equal to
1 by tan theta. This is our third formula. Supplementary angles. Here sine 180 minus theta. So we have right now apply similar fashion. We have to solve. Here is alpha is equal to 180 and uh, beta equal to theta. So we have to apply here sine alpha minus beta, sine 180 sine alpha cos beta cos theta minus here cos alpha is 180 and sine theta we have to. Okay, now have to now sine 180 will be, we have 0. So if sine 180 is 0, so cos is also will be 0. Minus cos 180, it's minus 1, and sine theta is similar fashion, minus 1 plus 1 sine theta. So we got our first answer. Next, we have our next answer is cos 180 minus theta equal to minus cos theta. These formulas are, you have to memorize dates. Now third one is you have a tan 180 minus theta. Here is minus tan theta. Okay. Similarly, we have a next one. We have to done by these angles here sine minus theta. Now second one is cos is minus theta, and third one is tan minus theta. Okay, sine minus theta will be sine theta. We have to write cos theta, and we have to write tan theta. What will be the on the negative here? This negative will be at outside the sine theta, and this negative is also outside the tan theta. Okay, dear friends, now what will be the sine theta, sine cos minus theta? सो cos माइनस थीटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे सेम रहेंगे. सो इस cos it's absorb the negative sign. Okay, cos is absorb the negative sign. Okay, dear friends, next we have a question is about next we have a question is about okay, the question is you have to find the value of sine square theta. So how we find this one? Here we know that sine theta and sine theta, these two multiply by give the answer is sine square. 2 by square root 5 here and 2 by square root 5. 2 and 2 multiply with each other, the answer will be 4. Square root 5, square root 5, the answer will be only 5. Okay, we got the answer is sine square theta here. Now we will moving forward. We have a B part, same question. B part, the B part is he said find the cos theta. So how we find the cos theta is cos theta we have to find. So sine is our opposite over hypotenuse. Okay, we just draw the angle here. Good one.
Okay, good one. Second is okay. Here we have opposite is 2. Look here, this is opposite is 2, and square root 5 is our hypotenuse, and what will be our base is x. We have to apply the Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Is hypotenuse square equal to, we know that hypotenuse square equal to opposite square plus adjacent square. Now what is the opposite is 2 square, what is the adjacent is x square, what is the hypotenuse is square root 5 square. So these square are cancelled. 5 equal to 4 plus x square. So 5 minus 4 equal to x square, x equal to 1. We got this one. Okay dear friend, we got this one, x equal to 1. Now cos theta mean co opposite over adjacent. So co mean cos opposite over hypotenuse. So opposite is 1 and hypotenuse square root 5. We got this answer. Okay, hopefully dear friend you can understand this topic. Now we will moving forward. Okay dear students, we have our next question is find the exact value sine 45 and sine 60 degree. This is 60 degree. Okay, 45 we know that its value is 1 by square root 2, and sine 60 we know that its value is square root 3 by 2. We have the value of square root 3 by 2. Okay, now square root 3 multiply by 1, the answer is square root 3. 2 and square root 2 multiply, here we got this answer. Now this is in this is a third equation, so we have to convert third into the simple equation. Here we have to multiply by 2 square root 2 and 2 square root 2. जब भी सर्ड आते हैं तो आपने जो सर्ड्स की जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है. नाउ 2 square root 6, here 4 square root 2 square, so we got 2 square root 6, 4 here 2, we got here 2 square root 6, the answer is 8, and square root 6 by 4, we got this answer. Okay dear friend, hopefully you can understand. Okay dear students, we have next question, the C part. How we solve this question, tan pi by 3 plus tan pi by 4 minus 1 minus cos pi by 3. So here we have to know about tan pi by 3. Its answer is square root 3. You have to memorize the trigonometric tables, and also you can find this value from the calculator. And tan pi by 4 is 1 by square root 2, and 1 minus pi by 3 is 1 by 2. So we have to solve this question. Pi by 3 plus 1, pi by 2 divided by 2 minus 1, 2, take its LCM. After that square root 3 plus 1 by square root 2, the answer is 1 by 2. So it will be go here, square root 3 plus 1 square root 2 multiply by 2 by 1, because it's reciprocal. Because um, now we have to solve this one 3, we have to solve this one by square root 2 multiply by square root 3 multiply by square root 2, it will be 1, and we got the answer is square root 6 plus 1
into 2 and square root 2, 2 square root 6 plus 2 divided by square root 2. We got the answer. Next we have a question. This here is angle system. Okay, now this angle system is working into this way. Here is we have first quadrant angle, this is third quadrant angle, and this is related to second and fourth quadrant angles. This line is we have to make this angle again and make this. Okay, now at first quadrant the angle it's going this way, in second quadrant the angle is going this way, and third angle is it's working look like this one, and fourth quadrant and this working look like this one. Here you can write it theta, and here you write it pi minus theta, and in fourth quadrant it will be pi plus theta, and fourth quadrant it will be 2 pi minus theta. Okay dear friend, hopefully you can understand the angle quadrant system. We have to solve some questions of quadrant system. One more explanation about the working about, let's suppose we have an angle is 240. Okay, how we will draw it? We can draw it into this way, because here is 0, 90, 180, and after that this 240s lie between 180 and between 180 and 270. Here 40 is 240 is look this one, this is making angle 240. Now second one is we have a B part in this way. Here we have a angle is minus 70. How we draw it? This way we can draw it by heading this way, because it's a against our first, second, and third quadrant. It's working. It's because it's negative. It's working. It's look here this one. So this is our minus 70 angle. Next our is C part. C part is we have 490. And how we draw the 490? This is in this way. The angle is look this one. Here is when one circle is completed, so this point is it 360. After going is we will add one 360. If we add it 130, then we get 490 angles. Okay, अगेन डियर स्टूडेंट्स, हमने एक सर्कल कंप्लीट किया तो 360 आ गया. अगर इस 360 में 130 को मोर ऐड कर दिया तो वो हमारे पास क्या बन जाता है 490. जैसा कि हमारे पास 130 आप अगर देखें तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ से 130 आप इसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास एंगल बनेगा 490 का. तो अब इन तीनों एंगल्स को हम इन पार्ट्स में भी इस तरीके से भी देखते हैं. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 180 में हमने क्या ऐड कर दिया, जो हमारे पास 240 बन गया. तो उसके लिए हमने 180 प्लस हमने 60 को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 240. तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री. इसी तरीके से अगर आप देखें ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है, ये एक सर्कल पूरा कंप्लीट होता है 360 का, लेकिन उस 360 में बेटा अगर हम लोग ये ऐड कर दें तो ये हमारे पास 190 बन जाएगा. ओके हो डियर स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस
this difficulty level of questions. Now some standard rule we have to discuss about of the trigonometry. What's the standard rule? Here I am writing standard rule of trigonometry. Here, if theta is in first quadrant is alpha, and second quadrant theta is 180 minus alpha, and third quadrant I have to zoom it. Third quadrant it theta will be 180 plus alpha, and fourth quadrant theta will be 360 minus alpha. Here I have to draw it. First quadrant theta same as it is, it will be alpha. Second quadrant theta will be 180 minus alpha. Third quadrant is theta equal to 180 plus alpha, and fourth quadrant is 360 minus alpha. Hopefully dear student you can understand these this type of the questions. Okay, move forward. We have to solving for the equation, how we deal the equation of the trigonometric equations. Okay, our first question is I have to write it equation solving. Okay, our first question is sin x equal to minus 1 by 2 and its interval is 0x less than 360. Here student, we write it into alpha sine inverse 1 by 2. Why I'm writing 1 by 2? I'm not writing is minus 1 by 2 because we have to ignore this is our basic angle. This is our basic angle, and here sine inverse 1 by 2 it will be 30 degree. Now we have to just ignore the minus. Just why we ignoring the minus? Look this way. This minus tell is in which quadrant sine is negative. We know that first quadrant all positive, sine, cos, sorry, tan, here tan, and here is cos. It's mean our third and fourth quadrant sine is negative. Third quadrant and fourth quadrant. Okay, I have to zoom in third quadrant. We know that we have to know at third quadrant we write it 180 plus theta, 180 plus theta or 180 plus alpha, you can as you wish, you like write it 360 minus alpha. Okay, now our alpha is 30, so 180 plus 30, the answer will be, here is answer will be x 210. Move forward. Here fourth quadrant x equal to 360 minus 30, x equal to 330. Once more I have to explain that this question, the question is that we have a solving solving equation sin x equal to minus 1 by 2, interval is 0 to 360. We have converted into the alpha angle because we know that the angle is over x. Here we have angle x, but we have discussed about here alpha is we just noted about the basic angle. We get the 30. After getting this 30 angle, we know that sine is negative in third and fourth quadrant. At third quadrant we know that the formula sheet is tell us 180 plus alpha. Here 180 because third quadrant it is added the sub angles 30, and fourth quadrant 360 is minus 30. Okay, I think okay, you have to completely understand this question. Now we have to move
to forward and more practice about these type of the questions. Okay, we have to. Okay, dear student, we have a question. Cos second question, cos x equal to minus 0.5. First of all, we write it into the form of alpha. We have discussed before why we converted this angle into the alpha. Okay, cos inverse 0.5, and we have to ignore the negative sign. A negative sign just shows the quadrant, nothing more. Here we got the answer is alpha is 60 degree. At 60 degree cos inverse 0.5. We know that cos is negative in second quadrant and third quadrant. For second quadrant and for third quadrant. Okay, for second quadrant we know that we write it the angle x is equal to 180 minus alpha, and fourth quadrant x equal to 180 plus alpha. Here x 180 minus alpha is 60 degree, x 180 plus 60 degree, we got x equal to 240, and here 180 minus 60, we get the answer is 120. We got these two answers. Okay, okay, dear friends, now move forward. We have a third question. Third question is related about the tan of x equal to minus 1 by square root 3. Here is minus 90 less than x less than 360. Okay, now again we have to write it in the form of alpha. Tan inverse 1 by square root 3. Okay, we got the answer is 30 degree. Okay, now we know that tan is negative into the which quadrant? Tan is negative into the second quadrant, because all positive sign tan cos, so sin tan is negative in the second quadrant and fourth quadrant. Okay, dear friends, move forward. How we solve this question? Okay, for second quadrant, for third quadrant, for second quadrant we write it 180, x equal to 180 minus 30 degree, x equal to 180 minus 30, it will be 150. For the third quadrant, sorry, it's a fourth quadrant. Sorry, it's a fourth quadrant, not third quadrant, it's a fourth quadrant. It will be 360 minus 30 degree, so we got the answer 330. Okay, this is easy how to understand how we solve by 0 to 360. We have to right now solve this question by 0 to 360, but in our interval, look this one, there is minus 90. Minus 90 is totally different thing. How we deal this minus 30? So for that purpose we will go to the reverse working. How the reverse working? It's going this way. I have write it this way. Okay, now if we go in reverse working, it will be x is over minus 30, because it start from the zero. Its starting point is zero and moving the against the our quadrant system, so it is answer is minus 30. We got the answer is minus 30, 150 and 330. These are our answer. Why we do not go, why we not हम इससे आगे क्यों नहीं जा सके? Dear students, that's the reason, because क्योंकि यहाँ से यहाँ पर तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास 90 से ग्रेटर है, क्योंकि इंटरवल आपके पास माइनस 90 है, तो आपने माइनस 90 से आगे नहीं जा सकते, तो इस वजह से आपका सिर्फ एक ही आंसर कंसिडर होता है. होपफुली डियर स्टूडेंट आप कैन अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को. तो हम आगे चलते हैं मज़ीद क्वेश्चंस के.
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 sin x। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो ये हमारा 4 क्वेश्चन बन जाएगा। 4 sin x - 3 इक्वल टू 0। हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? 4 sin x इक्वल टू 3। जूम भी कर लेते हैं ताकि इजी नजर आए। ओके, here sin of x equal to 3 by 4. Here we got the alpha value is sin inverse 3 by 4, and alpha we got the answer by using calculator 59। और इस तरह का क्वेश्चन तो ज़्यादातर ऐसा ही हो सकता है कि ये पेपर 2 का ही हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है। विदाउट कैलकुलेटर इसको पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। तो साइन हमें पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। साइन इज ओवर at first quadrant, and sine is going to our second quadrant. Okay, first quadrant and second quadrant. First quadrant and second quadrant. First quadrant, we know that same value of alpha, so x equal to 48.59, and for the second quadrant second quadrant it will be 180 minus 48.59, so we got 131.4। it's our required answer। 180 में से अगर हम 48.54 को माइनस करें तो 130.4, it's our required answer। Move forward, we have our next question number 5। how we solve this question? The question is 2 cos of x plus 1 equal to 0, and its interval is 0 to x and 360. Here also we have an interval. Okay dear students, next question is 2 cos of x plus 1, interval is 0 to 360। okay, how we solve this question now? This is 2 cos of x equal to minus 1 cos of x minus 1 by 2. So here is alpha equal to cos inverse minus 1 by 2. We got alpha equal to 60. You can ignore the minus. It's not necessary to write it here in a coordinate system. But quadrant is only for to tell us about the negative sign, positive sign. These shows us the quadrant. Sign is positive in first quadrant, second quadrant. Okay. Now cos is negative in, we know that, second and third quadrant. Okay, for second quadrant and third quadrant. For second quadrant it will be 180 minus 60 degree, x equal to 180 minus it is 20, answer 120, and third quadrant, just write it, third quadrant 180 plus 60 degree, so x equal to 240 degree. We got the answer. Okay, now move forward, we have question. In sixth question, 3 cos of x minus 1 equal to 0, 0 less than equal to x, x less than equal to 180. So here is cos of x equal to 1, 3 cos of x equal to 1, and cos of x equal to 1 by 3. We got these answers. Okay, here alpha we have 70.5. We know that cos is positive first quadrant and fourth quadrant, but if you look over limit, this is 0 to in over interval tell us 0 to 180, so we no need to going forward to second quadrant. We don't need about the third quadrant and fourth quadrant. We just only focus on the first quadrant. So first quadrant it will be
x equal to alpha, x equal to 70.5. This is our required answer. We know that cos is positive in the second quadrant and fourth quadrant. Cos is positive in the first quadrant and fourth quadrant. So but we utilized only first quadrant because due to this interval. Next question is we have related to the uh, radian. Here question is, in this question the interval is given by 0 less than equal to x less than equal to 2 pi. So he used 2 pi, it's mean he used the radian. Related to the question is radian. Okay, you have to memorize. If the question is given in the form of 2 pi, 3 pi, pi system, it will be they ask to the for the radian. Okay, cos of x equal to 0.5. So here is alpha equal to cos inverse 0.5. You have to convert it to your calculator into the radian mode. So alpha equal to, you got pi by 3. Okay, now we know that cos is positive at first quadrant and fourth quadrant. So this is your first quadrant, this is your fourth quadrant. For first quadrant, is it same as it is x equal to alpha, x equal to pi by 3. For the fourth quadrant, x equal to 2 pi minus alpha. So 2 pi minus pi by 3, we got the answer is 5 pi by 3. It's our required answers. Hopefully dear friend you can understand these questions. फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि दो टॉपिक्स P2 के अंदर एड मैथ में और इसी तरीके से एएस में तो कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन A2 जो एड मैथ के सिलेबस में कैलकुलेटर एक पेपर में अलाउ नहीं है। तो उसमें ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ विदाउट कैलकुलेटर, इसको हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास ये इक्वेशन गिवन दी है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। आपके पास सबसे पहले ये हाईलाइटेड ए है, ए को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरीके से एंगल के साथ जो बी मल्टीप्लाई हुआ है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सी है, इसको हम बेस लाइन कहते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जो टॉपिक है हमारे पास वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है और ये हमारे पास टॉपिक है y इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो सबसे पहले तो आपको साइन एक्स का विदाउट आपको टेबल की वैल्यू आनी चाहिए। जैसा कि मेरे पास ये एक वैल्यू है, मैं इसको जूम करता हूँ एक साइड पे, आप ऐसे देख सकते हैं। और ये है, देखें हमारे पास साइन ज़ीरो पे वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। इसी तरीके से साइन 90 पे आंसर क्या होता है, 1। साइन 180 पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 270 पे वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। अब जो एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन है वो बेसिकली वो ये कहता है कि इस 2 को डील करना है। इस 2 को डील करने के लिए मैं दोबारा इस टेबल की तरफ आता हूँ आपके पास। अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आता है, 2। और 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। और -1 से 2 को मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब हम इसका टेबल बनाएंगे डायरेक्टली। ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 2, इसी तरीके से -1 एंड -2। अच्छा, यहाँ पर हम एंगल ड्रॉ करेंगे 90, 180, 90 का गैप देने से 270 और 360। अच्छा, इसी तरीके से अब हम डायरेक्टली आते हैं कि हमारे पास पहली वैल्यू साइन 0 पे क्या थी, 0। साइन 0 पे 0 वैल्यू पुट कर लें। अब देखें साइन 90 पे आंसर क्या आ रहा है बेटा, ये 2, क्योंकि 2 एम्पलीट्यूड था ना आपके पास, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आ गया आपके पास। इसी तरीके से साइन 180 पे देखें क्या आंसर आ रहा है, 0। इसी तरीके से साइन 270 पे क्या आ रहा है, -2। और साइन 360 पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये हमारे पास 0। अब हम ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, देखें इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ।
ये हमारे पास सिंपल पहला ग्राफ ड्रा हो गया है फॉर साइन y इक्वल टू 2 साइन ऑफ x। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वो है y इक्वल टू 3 cos ऑफ x। अब इस डेफिनेटली इसका भी आपको टेबल मेमोराइज करना होगा, छोटा सा ही वैल्यू है। अगर मेमोराइज नहीं भी होता तो आप सिंपल सी जेन में रख लें। देखें साइन की वैल्यू है ना, साइन पे इसके स्ट्रेट लाइन ये 0 0 होगी, ठीक है, इसको मैं, और इसकी दूसरी स्ट्रेट लाइन देखें 2 1 और -1 हो जाएगी डायगोनल की शेप में। अब आ जाते हैं cos की वैल्यू। cos की वैल्यू में हमने क्या करना है, cos 0 1 0 -1 0, इनको मेमोराइज करना भी बहुत कॉमन सा है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए कि बेस लाइन क्या है। बेस लाइन आपके पास, बेस लाइन सॉरी इसको एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है वो 3 है। तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से, -3 से, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आता है। तो अब हम इसकी वैल्यू ड्रा करने के लिए पहले 90, फिर आ गई हमारे पास 180, 270 और आखिर में 360। अगर हम इसको जूम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3, इसी तरीके से -1 -2 -3, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 3 है और मिनिमम वैल्यू -3 है। तो अब आप देखें बेटा, 0 पे आपके पास क्या आंसर आया था, 0 पे क्या वैल्यू हुई थी, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। 0 पे वैल्यू क्या आई थी, +3। 90 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। 180 पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -3। 270 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। और 360 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो आपके पास जो ग्राफ ड्रा होगा वो इस शेप में होगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ यूँ करके, और यहाँ से ये कर्व बन गई। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ, वो है बेस लाइन। देखिए बेस लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, जैसा कि लास्ट पहले भी हमने कहा है, ये जो अलग से वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, बेस लाइन। अच्छा रिमेंबर डैट के एएस और एडमैथ के दोनों स्टूडेंट इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, दोनों का ये सेम सिलेबस है। अब हमारे पास क्या रहा है एडमैथ के स्टूडेंट के लिए, इस वजह से क्योंकि उनका विदाउट कैलकुलेटर का पेपर 1 आता है। ओके अब हमें पता है कि साइन एक्स का पहली वैल्यू क्या होती है, 0 पे 0 1 0 और -1, बार बार हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं, और ये इसको हम ऐसे दे रखते हैं, और ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया है, ठीक है। ओके नाउ हमारे पास वैल्यू क्या है, 1। अब देखें, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास बेस लाइन क्या है, वो 2 है। ये 1, इसको अगर जूम कर लूँ, 1 2 3, ओके ओके, और बेस लाइन हमारे पास 2 है, तो 2 पे हम बेस लाइन ड्रा करते हैं। 2 पे हमने क्या ड्रा कर दी, बेस लाइन। ओके इसके साथ हम लिख लेते हैं 90, एंगल ड्रा कर लेते हैं 180, 270 एंड 360। यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू एक और 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके अब हम आते हैं, सबसे पहली वैल्यू हम देखते हैं कि हमारे पास 0 है। तो डियर स्टूडेंट एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि बेस लाइन ही आपका 0 स्टार्ट करती है, ठीक है। इससे पहले प्रीवियस ग्राफ में 0 वैल्यू को 0 से हम स्टार्ट करते थे। अब चूंकि बेस लाइन 2 पे है तो आपका 2 पे ही ये वैल्यू आपके पास 0 ही कंसिडर होगी, ठीक है। अब 90 पे आंसर क्या आ रहा है आपके पास 1, तो आपने बेस लाइन से एक पॉइंट ऊपर की तरफ, एक ग्रिड, एक लाइन, एक पॉइंट ऊपर की तरफ आपने देखना है, 2 से आगे 3 की तरफ, क्योंकि ये आपके पास 1 एक ऐड हो गया है। इसी तरीके से फिर आपके पास 180 पे क्या हो गया, 0 आपके पास वैल्यू आ रही है, तो डेफिनेटली बेस लाइन ही आपके पास 0 कंसिडर होगी। इसी तरीके से 270 पे क्या हो रहा है, -1, -1 का मतलब है बेस लाइन से एक नंबर नीचे की तरफ। इसी तरीके से फिर बेटा आपके पास आ जाते हैं 360 पे 0, तो ये आपके पास ग्राफ
इस शेप में ड्रा होता है ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इजीली। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। सेम इज इट इज y इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस वन। अब हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। एक यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ड्रॉ करते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉस का टेबल आपके पास क्या बनेगा, कॉस 0 पे 1, कॉस 90 पे 0, कॉस 180 पे -1 और कॉस 270 पे 0। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपने विदाउट कैलकुलेटर ये सारी कैलकुलेशन करनी है। अब आ जाते हैं बेटा, इसका टेबल ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारा टेबल ड्रॉ होना शुरू हो गया है और ये हमारी वैल्यू मज़ीद ड्रॉ हो रही है। ठीक हो गया डियर फ्रेंड, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 1, अब सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 90, 180, 270 एंड 360। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया है 1 2 3 -1 -2, ये आपके पास आ गई हैं। तो आपने क्या किया बेटा, आपने बेस लाइन ड्रॉ करनी है। बेस लाइन कहाँ पे है, -1 पे। आप देखें -1 पे है, तो आपने -1 पे बेस लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप कैसे करेंगे बेटा, -1 पे बेस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास बेस लाइन ड्रॉ हो गई है। अच्छा, बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखें, सबसे पहले तो कॉस की वैल्यू कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, 1 से। कॉस 0 पे 1 है, तो बेस लाइन से एक लाइन जो ऊपर है ना, वही आपके पास क्या हो गया, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेस लाइन को आपने 0 के तौर पे कंसिडर करना है कि आपके पास एक्स एक्स 0 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 1 अगर का है तो एक पॉइंट आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ये 0 पे आपके पास क्या ये बन गया 1, एक्चुअली ये 1 है। अच्छा, अब 90 पे 0 है तो अब बेस लाइन पे आपने 0 ये ड्रॉ करना है। 180 पे आपके पास क्या आ रहा है, -1। -1 क्या है, बेस लाइन से एक लाइन नीचे, एक नंबर नीचे, ये हो गया आपके पास। इसी तरीके से बेटा आपके पास 270 पे 0 आ रहा है तो बेस लाइन आपके पास 0 बन गई। अच्छा, 360 पे आपके पास वापस 1 बन रहा है तो बेस लाइन से एक पॉइंट ऊपर की तरफ, ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया है। जी, आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारे पास। अम, इसको हम कहेंगे बेटा बेस लाइन प्लस एम्पलीट्यूड। ओके, ये है बेटा आपके पास y इक्वल टू 2 साइन x -1। अब डेफिनेटली हमें पता है कि ये -1 आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास बेस लाइन है, और जो है आपके पास 2 है, ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसको हम कहेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपके पास ये बन गया है, सबसे पहले तो साइन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0 1 0 -1। अब ठीक हो गया। अब आप देखें एम्पलीट्यूड की आपके पास 2, तो सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई किया तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ओके डियर फ्रेंड, ये 0, ये 1, ये -1, ये -2, और मैं इसको अगर जूम कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, -3। ओके डियर फ्रेंड्स, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेस लाइन कहाँ पे है। बेस लाइन हमारे पास है -1 पे, हमने बेस लाइन ये ड्रॉ कर दी, ओके। अब देखिए कि टेन, हमारे पास साइन क्या है, 0 पे क्या है 0, तो हमने 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 आपका बेस लाइन ही होगा। उससे पहले एक काम छोटा सा कर लेते हैं कि हमें सॉरी, एक काम छोटा सा कर लेते हैं कि
ये एंगल ड्रॉ कर लेते हैं 90, 180, 270 एंड 360। ओके, अब सबसे पहले जीरो पे आपके पास, वन पे क्या वैल्यू आ रही है, जीरो, तो बेस लाइन आपके पास जीरो, और 90 पे टू आ रहा है, तो आपने दो नंबर ऊपर की तरफ जाना है। 90 पे देखें, बेस लाइन से दो नंबर, बेस लाइन से एक नंबर ऊपर गया तो जीरो, दूसरा नंबर ऊपर गया तो ये वन, आपके पास ये वन पे आप वैल्यू आ गई। इसी तरीके से फिर आप आ जाते हैं 180, 180 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, तो बेस लाइन आपके पास जीरो बन गई। इसी तरीके से नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ जाते हैं, तो 270 पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2, तो -2 बेटा बेस लाइन से दो दो पॉइंट्स नीचे की तरफ जाएं, दो नंबर्स 1 2, ये आपके पास, तो बेस लाइन आपके पास यहाँ बनेगी। ठीक हो गया, क्योंकि जो बेस लाइन है उसको आप जीरो के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरीके से 360 पे आ जाते हैं, तो आपके पास वैल्यू क्या हो रही है, जीरो, तो ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, इजी हैं, आपको इजीली समझ में आ चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कहेंगे कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं फ्रीक्वेंसी हमसे डील नहीं हो पाती, उसको हम कैसे डील करेंगे। होपफुली बेटा हम कोशिश करते हैं इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी में एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके सामने, y इक्वल टू, मैं इसको पहले जूम कर दूँ, y इक्वल टू साइन ऑफ 2 ऑफ x, ओके, y इक्वल टू साइन ऑफ 2 ऑफ x। अब हमें इसका ग्रेड मालूम होना चाहिए, 0 1 0 -1। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 360। ओके, तो ये 2 साइकिल जो है वो क्या है आपके पास, 360, क्योंकि 2 साइकिल का 360 बन रहा है आपके पास। अच्छा, 1 साइकिल का कितना बनेगा आपके पास, तो आपने क्या किया, 360 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आप देखें 360 डिवाइडेड बाई 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हो गया, 180। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ये देखें कि ग्रिड आपके पास कितने बन रहे, देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ग्रिड्स बन गए हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसको 180 से डिवाइड कर दिया 4 को, तो हमारे पास क्या आया आंसर, 45। तो ये हमारे पास साइकिल का एक स्पेस बन गई, जिससे हमें पता चल गया कि हमने एंगल कितने लेने हैं, 45 के। अब आ जाते हैं हम इसके एंगल को, टेबल को ड्रा करने के लिए। ओके, और यहाँ ये बन गया, जी हमने तो ये स्टूडेंट हो गए हैं 90, ये हो गया है 180, ये हो गया है 270, और ये हो गया है 360। ओके ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, टेबल को मैं सामने लिख लेता हूँ यहाँ पर अगेन, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये हो गया है हमारे पास 0, ये 1, ये 0, ये -1। ओके, अब देखिए, चूंकि गैप, अगर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास गैप कितना है, 45 एंगल का है, तो हम इसको ड्रा करेंगे हमारे पास। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 ही आ रही है, तो हम ये कर लेते हैं, ये वैल्यू हम ड्रा कर लेते हैं 1 के लिए, और ये वैल्यू हम ड्रा करते हैं -1 के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ओके, साइन 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, साइन 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास गैप है 45 का बनेगा, ठीक है, ये 45, ये सेकंड गैप हमारे पास जो बनेगा 45 के बाद 135। ओके, 135 के बाद हमारे पास जो गैप बनेंगे, ओके,
फर्दर हमने मूव आगे करते हैं, हमारे पास जो गैप बनते जाएंगे वो हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये देखना है कि साइन 45 को हमने कैसे डील करना है। तो साइन देखें, पहली वैल्यू आपके पास 0 है, आपने इस ग्रिड को देखना है, ये पहली वैल्यू आपके पास 0 है तो आपने 0 पे ड्रॉ कर ली लाइन। अब सेकंड 90 पे आपके पास, अगर हम एज यूजुअल देखते हैं तो 90 पे क्या होता है, ये हमारे पास 1 होता है, लेकिन हमने नेक्स्ट ग्रिड देखना है 45 आपके पास 1 के तौर पर आप लेंगे। फिर नेक्स्ट बिट आपके पास क्या है, वो 90 पे 0, 135 पे आपके पास क्या आ रहा है -1, और 180 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0। इसी तरीके से दरमियान में ये वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1। फिर 270 पे 0, फिर 270 और 360 के दरमियान जो वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -1, ये 0। तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया, यूं करके ड्रॉ किया, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बन गया। अगेन डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी वो आपने देखना है बेटा। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास एंगल कितना है, ये 45 का है। तो अब आपके पास ये जो गैप रखना है वो आपने 45 का ही रखना है। देखें, ये जो हम यहाँ पर टेबल के मुताबिक देखते हैं हमें 90 का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपने ली है, जो साइकिल बन रहा है वो 45 का बन रहा है। तो हमने क्या किया, 0, 45 पे वैल्यू आपके पास 1 बन गई। फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास 90 पे 0 बन गई। फिर हमारे पास 135 है -1, फिर 180 पे 0 बन गई। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमारे पास आगे बढ़ती जा रही हैं और हमने इसी को आगे कैरी करना है। तो एज सीक्वेंस पे आपका ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मज़ीद हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको फ्रिक्वेंसी मज़ीद से मज़ीद क्लियर होनी शुरू हो जाए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ये है y इक्वल टू cos 3 ऑफ x। अब हम इसको कैसे डील करेंगे बेटा, 3 साइकिल का ग्रिड बन गया, वो कितना बना 360। अच्छा, 1 साइकिल का क्या बन गया बेटा, 360 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये बन गया आपके पास 120 का। अब देखें कॉस का बेटा टेबल 4, हम जब भी हम 360 पे डिवाइड करते हैं तो 4 पे डिवाइड होता है आपके पास, ये 1 सॉरी 1 0 -1 0। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से, क्योंकि 4 पे डिवाइड होता है, 4 से पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये एंगल कितना बना 30 का बना। अब 30 का मतलब है कि आपके पास ये ग्राफ थोड़ा लेंथी बनेगा। तो इसको ग्राफ को करने के लिए हमने वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी, सही हो गया, और ये वैल्यू हमने ले ली 0। अब हमारे पास ये क्या आ रहा है 1, ये -1, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ओके डियर फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो गैप रखना है वो 30 का गैप रखना है। अब 30 के गैप के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर हम इसको मैं जूम कर लूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये हमने 30 का गैप, फिर ये 60 का गैप, फिर 90, क्योंकि 30 का गैप से हमने आगे चलना है 30 60 90, और ये हो गया है 120, ये है 150, ये है फिर आपके पास 180, और इसमें 30 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास 210 बन जाएगा। 210 के बाद 240, और 240 के बाद हमारे पास ये गैप बन रहा है 300 और 330। ये हमारे पास टोटल गैप बन गए हैं। अब हमने इसको कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो आप देखें ये टेबल आपके सामने है। मैं इस टेबल को यहाँ पर अगेन से जूम करके लिख लेता हूँ 1 0 -1 0। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहली वैल्यू क्या है साइन 0, कॉस 0 पे क्या आ रही है हमारे पास 1, वो हमने डायरेक्टली ये ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट है बेटा वो 0, नेक्स्ट वैल्यू क्या 0, तो हमारे पास cos 30 पे क्या आ रही है ये वैल्यू, हम ये क्या कहेंगे 0। अब cos 60 पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है -1, हमने -1 ड्रॉ कर ली। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने ड्रॉ की तो वो कितनी आ गई 0 90 पे।
फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने ड्रॉ कर दी 120 पे क्या आ गया आपके पास 1। फिर हमने वैल्यू ड्रॉ कर दी 1 के बाद 150 पे, 150 पे वैल्यू आपके पास 0 आ गई। फिर 180 पे हमने वैल्यू ड्रॉ कर दी तो -1 आ गई। फिर 210 पे वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 आ गई। फिर 240 पे हमारे पास अगेन वैल्यू क्या होगी 1 आ गई। फिर इसी तरीके से 270 पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। इसी तरीके से 300 पे वैल्यू हमारे पास क्या होगी -1। और 330 पे हमारे पास अगेन वैल्यू क्या होगी 0। और 360 पे अगेन हमने वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमने बेटा इसका ग्राफ ड्रा कर देना है। तो ग्राफ कैसे ड्रा होगा देखें। 360 पे हमारे पास ये 1 बन रहा है तो हमने ये ड्रॉ कर दी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 360 पे ये ग्राफ बन गया। ओके नेक्स्ट हमारे पास, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं ओके डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसके मुताबिक आगे चलते हैं। वाई आपके पास क्या है 10 1/2 एक्स। अब हमने इसको कैसे लेना है 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन है 360। अब हम इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके ग्राफ को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें। 1/2 एक्स का एक साइकिल बन रहा है, 1 साइकिल आपके पास क्या है 720। 720 अब देखें 10 को, अब देखें कि 10 में आपने जैसा कि हमारे पास साइन और कॉस के 4 आंसर्स अप्लाई होते थे, लेकिन 10 के ग्राफ को हम थोड़ा डिफरेंटली लेके चलते हैं। एक ये आपके पास और एक ये वैल्यू आपके पास बनेगी 0 1 इन्फिनिटी -1 0 1 इन्फिनिटी और ये -1। ये हमारे पास ग्राफ, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रिड्स बन रहे हैं इस ग्राफ के। तो आपने क्या करना है बेटा 720 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब बारी आती है इसके ग्राफ को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। हमारे पास 10 1/2 एक्स है, 0 से 1 360 है, तो हमारे पास हाफ साइकिल चूँकि इस क्वेश्चन में है हमारे पास हाफ साइकिल 360 के इक्वल है और 1 साइकिल 720 के इक्वल हो गया। अब चूँकि हमें पता है कि 10 का जो ग्राफ है वो 8 पे डिवाइड होता है जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है 0 45 इन्फिनिटी, इस तरीके से हम इसको देख रहे होते हैं। हमें पता है 10 0 पे क्या हो रहा है 0, 10 1 पे 10 45 पे 1 आ रहा है, 10 90 पे इन्फिनिटी आ रहा है, इसी तरीके से सो ऑन ऑनवर्ड। हमें ये अगर दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ग्राफ अगर मेमोराइज करना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीक़ाकार ये है कि देखें आपके पास डायगोनल की वैल्यू सेम है, ये 1 1 है, इस डायगोनल की वैल्यू सेम है इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इस डायगोनल की वैल्यू -1 है, 0 से 0 है। अब वो ये इसके लिए है कि अगर आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फिर आपने इसको इस तरीके से मेमोराइज कर देना है, थोड़ा आसान भी हो जाएगा मेमोराइज करना। अच्छा अब हम आते हैं इसके ग्राफ को ड्रा करने के लिए।
अब हम देखते हैं कि इसके ग्राफ को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हम उसके लिए सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर देते हैं ये आपके पास वैल्यू भी है। उसके बाद हम आते हैं इसके अब हमें पता है कि इसका 90, 180, 270 और ये हो गया है 360। इसके ग्राफ के लिए सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ज़ीरो पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आई थिंक -1। ये हमारे पास बन गई, एक 1 होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी -1। अब ज़ीरो पे क्या हो गया हमारे पास, 10 पे पहली वैल्यू क्या 0, तो ये आपके पास 0 होगी है। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या हो रही है आपके पास 1, तो 90 पे क्या हो गया 1, क्योंकि हमारे पास गैप 90 का दिन है और इसी टेबल को हमने देख देख के बनाना है। अब 180 पे बेटा हमारे पास इन्फिनिटी टू एसिम्प्टोट इक्वेशन बन गई है। एसिम्प्टोट इक्वेशन के लिए आपने मिड में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देनी है और आपने ग्राफ इसका इस तरीके से हमें जैसे पता है कि एसिम्प्टोट इक्वेशंस जो होती हैं वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होती, वो कैरी ऑन चलती रहती हैं, ऐसे करके चलती रहती हैं, वो इसके साथ कभी टच नहीं होगी। ओके, तो हम इसको एसिम्प्टोट इक्वेशंस कहते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं कि 270 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट वैल्यू पे हम आ जाएं तो 270 पे वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है, तो -1 हमारे पास ये आ गई है। और 360 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0 आ रही है। तो जो कि हमने ग्राफ यहीं तक बनाना है तो हमने इसका एसिम्प्टोट से स्टार्ट करना है, क्योंकि 180 पे इन्फिनिटी था, तो आपके पास यूँ एसिम्प्टोट से बनते बनते आपके पास ग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर्स। ओके, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे y इक्वल टू 3 sin 2x + 1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें 2 साइकिल जो है वो कितना है 360, 1 साइकिल कितना हो गया है आपके पास 1 साइकिल 180, क्योंकि 2 से डिवाइड करें तो 180 और 180 को हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 45। अब बताएं कि स्टूडेंट 180 को 4 से क्यों 0 1 0 एंड -1। अगर आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लें और देखें डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर वैल्यू ड्रॉ कर दें। अब हमारे पास अब जो इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास 45 डिग्री है, ठीक है। हमने वैल्यू इसकी ड्रॉ कर लेनी है 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से -1 -2 आई थिंक ये इनफ होंगी वैल्यू। अब हमने सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बेस लाइन हमारे पास +1 है, तो ये हमने बेस लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास +1 की शेप में बेस लाइन है। और इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें बात समझने वाली है, क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है 3 है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0, इसको मल्टीप्लाई किया 3, इसको मल्टीप्लाई किया -3। अब बेस लाइन पे सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, ठीक है। और हम गैप दे देते हैं इसमें 90, 180, 270 एंड 360। और अगर हम मज़ीद स्मॉलर शेप में देखें तो ये 45, ये हमारे पास हो गया 135, और अगर हम इसको देखें तो ये 225, और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 315, आई थिंक 315, यस 315। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने
क्वेश्चंस की तरफ मज़ीद अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, साइन ज़ीरो पे हमारे पास पहली वैल्यू है ज़ीरो, तो बेस लाइन पे हमारे पास ज़ीरो। अब क्या है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास थ्री है, तो 45 के सामने थ्री। अब बेस लाइन से थ्री नंबर ऊपर की तरफ देखें, वन टू थ्री, तो ये फोर पे क्या आ रहा है आपके पास, 45 की वैल्यू ये आ रही है। करेंगे जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ज़ीरो, साइन पे ज़ीरो, तो हमने ज़ीरो बेस लाइन पे ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से 45 पे हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री, तो अब थ्री क्या करना है, बेस लाइन से तीन नंबर ऊपर की तरफ, टू थ्री फोर, तीसरा नंबर हमारे पास फोर पे आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है, तो 90 के सामने जीरो। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस थ्री, तो 135 पे माइनस थ्री, फिर 180 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। फिर उसके बाद 225 पे हमारे पास वैल्यू थ्री, फिर उसके बाद 270 पे वैल्यू ज़ीरो। इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रा करना है, हमने इसी साइकिल को आगे चलाना है। ये जो हमारे पास साइकिल है, इन्हीं वैल्यू को आगे रिपीट करते जाना है जब तक हमारे पास उसकी डोमेन, उसकी रेंज ख़त्म नहीं होती। तो सबसे पहले तो अब हम इसके ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम ये करेंगे कि यूँ करके ग्राफ ड्रा कर दिया। ये हो गया हमारे पास ग्राफ कंप्लीटली ड्रा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू थ्री कॉज ऑफ थ्री ऑफ एक्स प्लस वन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगेन इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको टेबल थ्री साइकिल क्या हो गया, 360 के, वन साइकिल किसके इक्वल हो गया आपके पास, 360 डिवाइडेड बाई थ्री, और इसको डिवाइड किया तो आपके पास 120 आ गया, 120 डिवाइडेड बाई फोर, क्योंकि इसकी जब भी हम टेबल लेंगे तो फोर वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, वन ज़ीरो माइनस वन एंड ज़ीरो कॉस की वैल्यू को। तो ये आपके पास 40 को किया तो 30, जब भी 30 का एंगल बनेगा तो डेफिनेटली वो काफ़ी लेंथी ग्राफ बनेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। अब हम देखें कि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड अगर आप देखें तो वो थ्री है, तो इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, माइनस थ्री से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसके ग्राफ के बनाने में। ये हो गया हमारे पास, अगर हम इसको, तो देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, हम इसको देखते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं ग्राफ को ऐसे करके ड्रॉ करूं, और ये हमारे पास क्या बन गया है, 90, 180, फिर ये बन गया है 270, और ये बन गया है 360। मैं इसको मेमोराइज, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या हो गया, वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, और ये हो गया फोर। इसी तरीके से माइनस वन, माइनस टू, आई थिंक ये काफ़ी होगा, इनफ होगा। आई थिंक हमें ज़्यादा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, हम ये देखते हैं बेस लाइन। बेस लाइन हमारे पास क्या बन रही है, वो वन बन रही है, तो हमने वन पे बेस लाइन को ड्रॉ कर दिया। अगर बेस लाइन को हमने वन पे ड्रॉ कर दिया तो अब हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं। देखें पहली वैल्यू क्या है, थ्री, तो थ्री के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको किधर देखना है, थ्री तीन डिजिट्स ऊपर की तरफ आपने देखना है, तो ये फोर पे। देखें वन से स्टार्ट करें, वन टू थ्री, तो ये आपके पास फोर पे जाके आपके पास तीन डिजिट्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो। अब ये देखें कि हमारे पास ये क्या है, 30 का गैप बन रहा है, तो 30 का गैप के साथ ये 30, ये 60, ये 120, ये 150, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 210, 240, 300 और
360, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इसका। अच्छा, अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0। पहले ही हमारे पास 3 होगी, तो हमने बेस लाइन से 3 नंबर ऊपर की तरफ देख लिया, तो ये हमारे पास 3 बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, वो यहाँ पर हमारे पास 30 के सामने वैल्यू ड्रा हो रही है। फिर उसके बाद -3, 60 पे -3, तो बेस लाइन से 3 वैल्यू नीचे, 1 2 3, ये नीचे 3 वैल्यू ये बन गई। इसी तरीके से 90 की तरफ हम देखें तो 90 पे हमारे पास क्या हो रहा है, 0 बन रहा है, तो बेस लाइन के ऊपर 90 बन गया। फिर 120 पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी है, +3। इसी तरीके से 150 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, 0। फिर आ जाती हैं 180 पे हमारे पास -3 बन रहा है, तो हम इस तरीके से करेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 210 पे हमारे पास अगेन 0 बन रही है। फिर 240 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, +3। फिर 270 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, 0। और 300 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, 2। और 340 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, 340 है। इसको सॉरी, इसको हम करेंगे 340। और 340 पे हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 0। और 360 पे हमारे पास वैल्यू बन रही है वो 3 बन रही है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप पे बनेगा। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि विदाउट कैलकुलेटर आपने ग्राफ को कैसे डील करना है। थैंक यू सो मच। Have a question topic regarding about the trigonometry, and its subtopic is equation solving. Previous we have to solve the from interval 0 to 360. Here interval is 0 to 720. Cos of x equal to 1 by 2. We know that we have to convert it into the alpha, and cos inverse 1 by 2. So here we get the answer is 60. Okay, dear student, I hopefully you can understand it very easily. Now we know that cos is positive at first quadrant and fourth quadrant. For first quadrant, here we write it cos is positive first quadrant and fourth quadrant. Here for first quadrant and fourth quadrant. For first quadrant, we get the answer is theta equal to alpha. It's mean x equal to 60 degree. Okay, dear friends. Now for fourth quadrant, we have to write it 360 minus alpha. Alpha is 60 degree. So we get 360 minus 60. We have the answer is 300. Hopefully, dear students, you have to understand it this part. Now one more thing is this interval. Look, this interval is 720. If 720, we know that 720 means it's one circle is complete. Now it start again for the second quadrant, for the second interval. Okay, now how we write it, the answer is we have to write it. One answer is you have a 60, second answer is 300. At third answer, what would the third answer, if we complete it this way, look this one, if we complete it now, look this one, this is our 360. After 360 we have to add more 60. After 300 we have to add 360 more. Okay, simply that we got the answer is 300, and 360 plus 60 we get the answer is 420. Simple is that we have to add 360 at here. Now again we have to add this, because after going 360, here 90 add, then 90 add, then 90 add, then more we have to complete. When we add it 300 plus 360, we got the answer is
360 and 300 is we have 660. Hopefully you have to understand these questions. Question number 2. Here we have a question is tan of x equal to 1 by square root 3 and minus 180 less than x less than 360. Okay dear student, how we solve this question? This is simply that this at here it will be tan inverse 1 by square root 3. What's the answer is 1 by square root 3. At this quadrant we have to write it will be 30 degree. Okay, now we know that at which quadrant tan is positive and which quadrant tan is negative. Okay, we know that tan is positive at first quadrant and tan is positive third quadrant. Okay, we know that, and this is simple theta equal to alpha, and here is we write it theta equal to 180 plus alpha. Okay, now move forward here. Our x is first answer is we have if we start from here we got the answer is 30 degree now, and when we move forward from here to here we get the answer is 180 plus 30, we get the answer is 210. But when we look over this interval, this is there is minus 180, so we will go for the against the against this rotation, we will go for its clockwise this way. No, from here it from negative this quadrant is 0, this quadrant is minus 90, minus 180, minus 270 and minus 360. Okay, we start from here. This is our first quadrant, then move for the second quadrant. So we know that second quadrant the answer is 180 minus alpha. 180 minus alpha is 30, so we get the answer is 150. So it is a 150, but here sign will be changed. Why sign the change? Because it is moving toward the clockwise rotation, so it there is we got the negative. Okay dear student, I hopefully you can understand this question's difficulty level. Okay, now okay, we have a next question is tan x equal to square root 3 and its interval is minus 360 less than theta less than 720. Okay, we have to find the here is alpha we have a tan inverse square root 3. I have to zoom this idea. Okay, now we get the alpha is 60 degree. We know that tan is positive at first and third quadrant this way and this way. Tan is positive at first and third quadrant. If we start from here, here is first quadrant, we know that there is no change, so we have to write it uh, x equal to 60 degree. Okay, now we have to start from first quadrant to third quadrant. We get the answer is, because at third quadrant we know that 180 plus alpha, so 180 plus 60 we get the answer is 240. Now our third one is we have, if we start from here because the interval is 720, so we start from here, moving here and complete it here first circle and add 60, so 360 plus 60 we get the answer is 420. Simple that we just add here 360 only. Now similarly when we add 240, next one is because it
This one is going from here. We have to complete 360. Now we have to go to the add more 240, or we can easily write it plus 360. Both these are things right. So we get the answer is 780. Okay, if we look at our interval is 720, not 780. So this answer is, we just ignore this answer. Okay, this one is this, all these questions for the positive interval. Now move forward, we have a negative interval for this purpose. Now I have to write it again. Okay, dear students, this is our first quadrant and this is our third quadrant. But here is for negativity, negative 360, we had to start at 0, minus 90, minus 180, minus 270, and minus 360. We have to write it minus 360. Okay, we start from here and go to here. So our first answer is for second quadrant. There, this one is second quadrant. For second quadrant is, we know that 180 minus alpha. 180 minus alpha means 60 degree. So we get the answer is 120. Okay, now this is not one, no, positive 120. This is minus 120. Why is negative minus 20? Because we have moved toward, uh, we have to move clockwise directions. Now again we will start from here and go to the our fourth quadrant, because it, this one first, this one second, this one is third, this one is fourth. For fourth quadrant we write it 360 minus alpha. So 360 minus alpha mean 60 degree. So here answer is minus 300. So we have to write our answer into this form: minus 120 minus 300, 60, 240, and 420. Okay, dear students, you have to understand this difficulty level of questions. Okay, now we have to move our fourth question. What is the fourth question? We have how to write our fourth question is this one is. Okay, we have to write it cos 2x, 2x equal to 1 by 2. Our interval is 0 less than x less than 360. Okay, no, look this one, there is 2x. Okay, first of all we have to deal to this, this for interval, we have to multiply by 2. So when we multiply by 0, we get the 0. When we multiply by x, we get the 2x. And when we multiply the 360, we get the 720. Now, actually, we have a, this is our interval. Okay. How to deal this one? We have to write it alpha. Here, cos inverse 1 by 2. Okay, now alpha is, we got the answer is 60 degree. It's very simple. Okay, dear friends. Okay, we have cos is positive at first quadrant and cos is positive at fourth quadrant. We have a cos at first quadrant and cos is positive at fourth quadrant. Okay, now how to solve this question from here? If we start from here, this will be 60. Our answer is 2x, because here is 2x and we have to write here 2x. Okay, 2x, it will be 60. Okay, now we will go forward
If we start from here and go to the fourth quadrant, for the fourth quadrant we get 360 minus 60, we get the answer is 300. Okay, so our answer is 300. Now this is our, we have to move forward, because this is, I have to change the color is now. No, because our interval is 720. Okay, we start from here. Here we have start from here, and this is complete one cycle. Okay, 360. 360, when we add 360 more 60 added. Okay, simple is that we have to add, here the answer is 360. 60 plus 360, we get the answer is 420. Okay, dear student, you have to understand this question. Now move forward. Now if we add 360 plus 300 plus 360, we get the answer is 660. Okay, after we have moved forward, so our range will be exceed by 4720. So these are our answers. Okay, but one more thing is, because this is 2x, we need the only x answer. Okay, x, if we this 60 divided by 2, 300 divided by 2, 420 divided by 2, 660 divided by 2, we get the answer is 30 degree, 150 degree. 420 means 420 means we have get it, 210, 210, and here is 330. We get the all these answers. Hopefully, dear student, you can understand this difficulty level of questions. Okay, we will move forward. We have a question is sine 2x 1 by 2, and the interval we have 0 less than x less than 360. Okay, dear students, how to deal this question, because here is 2, so you have to multiply by 2. We get the answer is 0, 2x, and 360 multiplied by the answer is 720, and alpha is, we got the answer is sine inverse 1 by 2, and we get the answer is 30 degree. Okay, next we write it 2x equal to, sine is positive at first and second quadrant, first and second quadrant. Okay, now we have to start from here. This is 30 degree, we have to write it, it's 30 degree. Now if we move from here to here, we get the answer is 150. Why 150? Because 180 minus alpha, 180 minus 30, the answer is 150. Now we have to move next directions. Next direction is, because at, we just add the 30 degree 30, because if we add 3c, because look at this one, there is complete over one cycle, then add 30 degree. So simple that we have also write it into this form. You just 30 add 360, you got the answer is 390. Okay, dear student, now you have to add more 360 degree, you get the answer is 510. Okay, dear student, you have understand these questions. Now we find here x. Okay, x 30 divided by 2, we get the answer is 15. 150 divided by 2, the answer is 75. 390, 195, and 510, 225. Okay, we have to complete these questions. Now we have to start, move forward, and
We have one more check that 510 divided by 2. The answer is 2 ones are 2, 2, 2, 5, 1, 2, 5. Sorry, dear student, this is 2 to 5. The answer is 2, 5, 5. Okay, this is our answer. Uh, Question number 6. Okay, the answer is question is cos 2x plus 60 degree equal to 1 by 2. Okay, so okay, wait a minute, I just have to move it here. Yes, okay, here you have 0, 0 less than and equal to x less than equal to 180 degree. Okay, um, we got the answer is alpha. First of all, we have to note about the interval. Here if we multiply by 2, we get the answer is 0 less than equal to 2x less than equal to 360, because here is 2x, we have to convert it into the 2x. Now further add 60, add 60, we get the answer is 60 at left hand side, 2x plus 60 less than 360 plus 60, we get the answer is 420. 60 less than equal to 2x plus 60, and here is 360 plus 60, we get the answer is 420. Hopefully dear student, you have to understand this level of difficulty questions. Now move forward. Here is alpha. Alpha is cos inverse 1 by 2. So our answer is cos inverse 1 by 2. We get the answer is 1 by 2. Okay, dear students, we add 6 question. Cos inverse 1 by 2, we get the answer is 60 degree. Okay, now at here we have to write it 2x, 2x plus 60 equal to it is cos is positive at first and fourth quadrant. Okay, at first quadrant, if we start from here, we get the answer is 60 degree. Okay, now when we start from first quadrant and move to the fourth quadrant, so here 360 minus 60, we get the answer is 300. Okay, now because our interval is 420, we will move more. Here it's, we will move from, we have to complete this one circle and then add 60. Simply that we just add here 360, we get the answer is 420, and 420 is our last limit. Okay, though we have to no need to move next forward. Okay, now how to, actually we have to need the answer is only x. Okay, how we convert it into the x, 2x 60. First of all, we have there is 60 minus 60. Okay, because this 60 is positive and other side it will be negative. 60 minus 60, we get the answer is 0. 300 minus 60, 420 minus 60, so we get the answer is 0. 360 minus 60, we get the answer is 240 and 360. Okay, now we have to divide by 2, because at left side there is 2 and other side, if we divide it by 2, we get the answer is 120 and 180. Hopefully dear student, you have to understand this question. We will go forward. Here we have to move forward. Here is next question is
uh, question number, last question is 6, so this question will be 7. Cos 2x minus 80 square root 3 by 2. Okay, and its limit is 0 less than x less than 180. Now how we deal this one, because here is 2x minus 3, so also there should be 2x minus 3. For this purpose we have to first of all multiply by 2. We get the answer is 0. 2x 180 multiplied by 2 is 360. Now we have to subtract everywhere 80. Okay, this is minus 80. 2x minus 80, 360 minus 80, we got the answer is, I think, 280. Okay dear friend, you have to understand this level of question. And here cos inverse square root 3 by 2 and alpha is 30 degree. Okay, this is 2x minus 80. Okay, wait a minute dear friend. 2x minus 80, this is 30. Okay, because we have to write it, our cos is positive first quadrant and fourth quadrant. At first quadrant this is same, and then it move from here to here. So first quadrant it will be 30, because its limit is 280. So when we put the answer is here 360 minus 30, we get the 330. So we don't write to 330 because our limit is here, look this one, our limit is at 280, not we will go next level. Okay, um, after solving this question, now second one is there is limit is minus 80. Now how to deal this one? Okay, just change the color. If we start from clockwise direction, this will be our first way. There is minus 30. When we move forward here to here, here to here, so we know that it will be to start from the first quadrant and go to the fourth quadrant. So our limit is only 80. No need to move forward from first quadrant to second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. We have the stick stuck on the only first quadrant because its limit is 80 degree. Okay, now we have to write the answer is 2x at 80. In other side it will be subtract. Okay, because left side 80 is negative and right side it will be positive, add to the 30. So 80 minus 30 plus 80, so we get the answer is 80 plus 110, there is 110, minus 30 plus 80, we get the answer is 50. And x is, if we divide by the 5, there is 55 and 25. X, we have the answer is 25 and 55. This is our answer. Hopefully dear student, you have to understand these questions. We will go to the next question. 10 x by 2 and minus square root 3. Okay, how to deal this question, and just write its limit also. 0 less than equal to x, x less than equal to 500. Okay, how to deal to this interval. Okay, because at here there is x by 2, so you write it here, x by 2, 500 divided by 2, we get the answer is 250. Hopefully dear friend, you have to understand the intervals. Now we have to solve our question. Here is 10 x by 2 equal to minus square root 3 by 2. We just change the color. Okay, here is alpha equal to square root 3 by 2, we get the answer is 0.89. Okay,
Now we know that tan is negative at second quadrant and fourth quadrant. Tan is negative. I have to write tan is negative second and fourth quadrant. Okay. Now where is x by 2? We get the answer is, if we start from here, first quadrant, we know that 180 minus alpha. So what is 180 minus alpha? We have to write it 139.1. Okay. Why here we write it 180 minus alpha? We get the answer 139.1. No, we don't need to move here, here, because our limit is 270. Okay. So if 270, this is exceed the 250, so we don't need to move from second quadrant to third or fourth quadrant. Okay. We have to stick on the our second quadrant. Here x, this is x, and these two multiply by the 139.1. We got the answer is 278.2. Hopefully dear student, you have to understand this level of questions. Here we know student, we have a first question. The first is sine square x plus cos square x equal to 1. This sine square we have to derive two more formulas, 1 minus cos square x. Here next is, if we derive cos square x, here 1 minus sine square x. We have just, first time we have to shift by cos square, and second time we have to shift sine square. Okay. Now next is, we know that sine uh, tan of x equal to sine x over cos x, and also cot x is reciprocal of sine, reciprocal of tan, we have to write it cos x over sine x. Okay dear student, you have to understand, hopefully you have understand this question. Next is, we have secant x equal to 1 over cos x, and cosecant x 1 over sine x. Similarly, we have more formulas is secant square x minus 1 equal to tan square x. Also secant square x minus tan square x equal to 1. This is another identity. Um, and more, we have a formula is, we have also write it tan of x equal to 1 over cot x. Similarly, cot of x equal to 1 over tan x. Hopefully you have to understand these questions. We will start some questions of regarding about a trigonometric identities. We have start a very simple question. Prove, question is prove identities. Our first question is cos of x sine of x divided by tan of x equal to 1 minus sine square x. Dear students, how to write it, this question. Okay. Now we have a cos of x sine of x. What is the answer is tan x. We know that. I have to write tan of x equal to sine x over cos x. The ratio sin x and cos x is equal to tan x. Here is sin x and here is cos x. Now sin x cos x divided by sin x over cos x, because this portion is divided, we have to write it divided. Okay. Sin x
cos x. If we in mathematically rules, if we multiply it, and this will be uh, flip their positions, okay. So this one is sin x, sin x cancel with sin x. So we get the answer is cos x, cos x, it will be cos square x, okay. And cos square x, we know that the formula is cos square x equal to 1 minus sine square x. The answer is 1 minus sine square x. So we get the answer of 1 minus sine square x, okay. This is prove our identities. We will start our second part, B part. This is first part, this is second part. Second part is or is 1 minus sine square x divided by cos x, and it will be cos x, okay. Very simple. 1 minus cos square x, this is here, we have to write the formula cos square x equal to 1 minus sine square x, okay. This is initial our identities, okay. 1 minus sine square is cos square x, and cos x, this cos and these cos are cancelled with each other, so we get the answer is cos x. this is our this is our right hand side. Now we have to move next question. Just add the pages. We have to, okay, dear students, we will start from our third question. Third question is tan square x minus sine square x equal to tan square x sine square x. We know that tan square is, our answer is tan will be sine square over cos square, sine square x over cos square x, minus sine square is same pattern. We have to take its LCM. This is nothing, this is 1. We have to LCM, we get the answer is sine square x minus sine square x into cos square x, okay. Now what we are requirement at right hand side, there is only tan square and cos sine square, so we have to write it into sine square. If we take the common sine square x, we get the answer is 1 minus cos square x. Now this is our cos square x. Look this one, these two one, they are divided by each other. Cos square x, 1 minus cos square, we get the answer is sine square. Hopefully dear student, you have to easily understand it. Sine square over cos square, what's the answer, tell me. Sine square plus cos square, we get the answer is tan square x. And sine square, what's the answer is sine square is sine square, we get it's our right hand side. So very easy, very simple, just you have to memorize the formula, okay. Some formula is given your formula sheet, you must you need to understand these questions, okay. Okay, next one is we have start from another level of questions is 1 over cos. Our question number 4, 1 over cos minus cos x equal to sin x tan x. So our answer is cos x cos square x. Just take its LCM, okay. Take to left hand side. So 1 minus cos square, it will be sin square x cos x. But right side we need this way. So we have to write sin x into sin x. We have to split sin.
So this sine over cos, it will be 10x, and this is sine x. Oh, we have to prove this one, tan x sin x. We have to prove right hand side. Okay, dear student, hopefully you have to understand these questions. Okay, dear student, we have to solve this question, how to prove this identity. For this purpose use we have to open this question, 1 plus sin x, 1 plus sin x. So we know that the identity open is 1 square sin square x plus 2 sin x. Okay, now we have to solve. Next one is plus 1 plus sin x, 1 square plus sin square x minus 2 sin x. Okay, now we have plus 2 cos square x. Okay, how to solve this one? Here one is similar, sin square x plus 2 sine of x. Next one is this one, plus 1 square sine square x minus 2 sin x plus 2 cos square x. Now if we look this one, 1 plus 1, it will be 2 sine square x plus sine square x, it will be 2 sine square x, 2 sin x minus 2 cos x. This will be cancelled with each other. So next one is 2 cos square x plus 2 cos square x plus 2 cos square x. Now this is 2, at the from here and here, these two will be common. Take common, sin square x cos square x, 2 plus 2 sin square plus cos square, it will be 1. The answer is 4. Okay, we have to solve. Next question is, we have a question number 6. The question is 6 is, we have cos square x minus sine square x equal to 1 minus 2 sine square x. Okay, how we solve this one? Look, this one, there is sine square, so we have to convert. There is no cos square x at right hand side, so we will convert the cos square x. Because there is no cos square x, we have to convert every value into the sin x. Okay, cos square x, we know that from identity or first formula, cos square is 1 minus sin square x. We know that cos square x, I have to write it, cos square x equal to 1 minus sin square x. Okay, now minus sine square x is same as it is, we have to write it 1 minus sine square x minus sine square x, 1 minus 2 sine square x. This is our answer from right hand side. Okay, now move forward. Our next question is um, cos square x. We have next question is cos square x. The question is sin x over 1 plus cos x plus 1 plus cos of x divided by sine of x equal to 2 sine of x. How we solve this question? Okay, dear student, we have to convert it into the next page. Wait a minute, I have to copy and move here. Next page. This is our 7 question. Okay, now how to solve this one? First of all, we have to take LCM from
left hand side. 1 plus cos of x sine of x. 1 plus cos x, it will be sine square x. Sine, we get the answer is sine, we get 1 plus cos of square. Now sine square x plus 1 square cos square x plus 2 cos of x. We have to open the formula is similarly I have to write it here because this is a plus b square. The answer is a square plus 2ab plus b square plus b square. Have to write it here. This is the formula. This is our a, this is our b square, then 2ab we get this answer. Okay, hopefully you have to understand this one. Now 1 plus cos x sin x. Sin square plus cos square, it will be sin square plus cos square x plus 1 plus 2 cos x, 1 plus cos of x sin x. Sin square plus cos square, it will be 1. We have to know about the sin square plus cos square, it will be 1. Okay, plus 1 plus 2 cos of x, we got 1 plus cos of x into sin of x. 1 plus 1, it will be 2 plus 2 cos of x, 1 plus cos of x, it will be sin of x. We got the answer is here is 2 will be common. 1 plus cos of x divided by 1 plus cos of x into sin of x. This 1 plus cos, this 1 plus cos, which are cancelled, so we get 2 sin of x. We got the answer. This is what required. So dear friend, we have to